morning student. Welcome back to Google Classroom. Student, we had started the algebra topic and we had completed 1.2 also right now. Now we are going to take the 1.3, but before going to the exercise, let me have an explanation to this. Okay. Here student, the first topic we have to learn, that is Venn diagram. Now we will go a new topic for you student, because yesterday we don't have any of these things. Okay. So if you don't understood my lecture student, go 2-3 times the recorded video and you can able to see. If you have any doubt, so I am in the school, you can come and ask me, but not so many students should come and see. Okay, easy way I am explaining you student, so just cooperate. Okay. Now student, we have Venn diagram. What is Venn diagram student? The Venn diagram is in any shape. In any shape we have to represent the element. Okay. It is normally I had taken this Venn diagram as see like this. Okay. It is Venn diagram. Indicate here Venn diagram. And whatever the question you have, the given, the element you are going to find it, you have to represent here. Okay, you have to represent here. Whatever. Okay. It should be in the, not should be in the square box. It can be in any you can have a circle also student, or you can draw oval also in the box. Anything. You have to first find out the elements by listing method, and then we have to represent it. The question will be going to come in the exercise. I am going to explain you how you can do. Now that next is subset. The subset symbol is like this student. Subset means like this. What is subset? Subset means whatever the element we have in one set. Okay, and same element we should find in the other set also. Then we can call there are subset between them. I will explain you. Okay student, my voice is audible to you. Okay now? Now you can hear me my voice. Student, subset indicate the symbol like this. Okay. Now I am taking I have the set A. And I have the element as 2, 4, 6. Okay student. And next I have the element of B also. And now I am going to have 4, 6, 8. Okay student. Yeah. Now see. How I can say A is a subset of B. How you come to know? Because whatever I have the element now. See, I can write here 2 also. So I have 2, 4, 6 in B set also. Whatever the element I have in A set, it is in the B set also. Right now? So I said A is a subset of B. Students सुनो अच्छे से. जो भी एलिमेंट मेरे पास A सेट में है, वही एलिमेंट अगर मेरे पास B सेट में होता है तो हम बताएंगे कि A क्या है, सबसेट है B का. लेकिन स्टूडेंट जब कोई भी एलिमेंट मैच नहीं होगा तो हम लोग उसको सबसेट नहीं बोलेंगे, फिर कट कर देंगे. ठीक है. नाउ वन मोर एग्जांपल, वन मोर आई कैन टेक एलिमेंट ऑफ C, दैट इज what we going to write here? 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6, like this. Now I can say I have the element in what A set. क्या है मेरे पास A के set के elements? 2, 4, 6. Find out 2, 4, 6. So I can go for set A is a subset of C. Right ना? A के सब जो भी एलिमेंट एक सेट में है वो एलिमेंट मुझे C सेट में मिल रहे हैं, मींस A जो है वो सबसेट है C का. पर हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि C is a subset of A. I can't say that C is a subset of A. Why? Why? Because I have lot of element in set C. मेरे पास सेट C में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 और 6 है, लेकिन A सेट में नहीं है.
मैं ये नहीं बोलूंगी, ये रॉन्ग हो जाएगा। हम ये नहीं बोलेंगे सेट सी इज अ सबसेट ऑफ ए। समझ में आया स्टूडेंट? क्योंकि सी के एलिमेंट्स ए में कंप्लीट नहीं है, पूरे एलिमेंट नहीं है, इसीलिए हम नहीं बोलेंगे सेट सी इज अ सबसेट ऑफ ए। इट इज नॉन सबसेट। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, universal set, is very most important set here. We can have a star on that. Universal set. Universal set means all the elements in every set. You have two set. Okay, you have two set. Give an example. मैं आपको example देती हूँ. Universal set you can understood with the help of that Asadullah School, English High School is your universal set. Okay, in that 9th standard having 4 division. Okay, so division A, B, C, D, right ना? So all the division हम जब plus कर लेंगे, complete उनको साथ में लेके आएंगे, तो we will call that universal set. Okay, understood now? See like this. Now I have set A. 1, 2, 3, 4, 5. And next I have set B. That is 5, 6, 7, 8, 10. 9, 10. Right student? Now I have to write universal set. हम universal set कैसा बनाएंगे? So for that I have to write capital U. हाँ? Student be prepared. Universal set indicate capital U. हाँ? Universal set means all the element. Now I want the universal set में सारे element होने चाहिए. कौन से elements होंगे? A के देखो 1, 2, 3, 4, 5. Again 5 is repeating in B set. So don't write. One at a time we have to write. Next 6, 7, 8, 9, 10. It is a universal set. Understood? All the elements. Now I have two set. In the question, in the exercise, we have lot of set, 3, 4, whatever. Okay? So whatever set elements we have here, we have to put in the universal set, and by the listing method, and only one time we have to consider the elements. Understood? Universal set क्या होता है? जो भी elements A और B set के रहेंगे, वो element हमको universal set में एक बार लिखना है. Okay? Now next, complement of set. See, very easy complement. Complement means what, student? Here I am taking this example only. Now I have universal set 1, 2, 10, and I have A set also, that is 1, 2, 3, 4, 5. Right? Now whatever the element left in the universal set, जो भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में बच गए, हमने क्या किए? पहले चेक करेंगे हम कि देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 एलिमेंट्स मेरे ए सेट में है. देखो 1, 2, 3, 4, 5. Now how I come to know कि कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे? So स्टूडेंट, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सेट कैसा लिखते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ऐसा लिखा जाता है. ओके, नाउ व्हाटएवर द कॉम्प्लीमेंट सेट किसके भी बन सकता है, पर आपको क्या करना है? दोनों सेट, कौन से सेट? जो सेट का फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट, वो सेट और यूनिवर्सल सेट को कंपेयर करना है. जो भी एलिमेंट्स हमारे यूनिवर्सल सेट में बच गए, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएंगे. तो यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट बच गए स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पर कौन से एलिमेंट बचे? 6, 7, 8, 9, 10 है ना स्टूडेंट्स? ये बच गए हमारे कॉम्प्लीमेंट सेट में. तो हम लिखेंगे किसको कॉम्प्लीमेंट सेट चाहिए? ए का. तो हमने लिख दिया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मींस क्या रहेगा? 6, 7, 8, 9, 10. अंडरस्टूड स्टूडेंट? अभी सपोज मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट है. ओके, नाउ आई हैव, मुझे कुछ बोला है कि ना बी कॉम्प्लीमेंट का भी सेट ढूंढो. तो मैं बी कॉम्प्लीमेंट के पहले बी के एलिमेंट्स क्या है वो देखती हूँ मैं. 2, 4, 6, 8, 10. ये बी के एलिमेंट है. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? पहले यूनिवर्सल सेट में से
और किसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बी का। तो हम लोग पहले बी सेट के कॉम्प्लीमेंट को एलिमेंट को देखेंगे कि क्या सेम सेम है दोनों में। सीधे को यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, 4 है, 4 है, 6 6, 8 8, 10 10। अभी हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट में सब टिक कर दिए कि हमारे पास ये एलिमेंट ऑलरेडी किस में है, बी में है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट ढूंढेंगे। तो बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट किसको बोलेंगे, जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में बच गए। तो अब देख रहे हैं ना स्टूडेंट, कौन सा एलिमेंट बच गया, बताओ स्टूडेंट कौन सा एलिमेंट बच गया, 1 बचा, 3 5 7 9, ये हमारे सेट के एलिमेंट्स बच गए। तो हम कैसे लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट में 1 बच गया, 3 5 7 9, इट इज कॉल्ड ए बी कॉम्प्लीमेंट। अंडरस्टूड स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं, राइट नाउ it is a universal set, we have to match the element with the given set, whatever element left in the universal set it's to be said a complement set. Understood? Yes student. Now in the last lecture I also informed you have to take the test book and sit with them because I am going to write the question again and again. Okay, now we are going to start the practice set 1.3. Very first question, true or false. True or false, they ask whether the set are complement or not. So we have to check first of all. We have to check whether they are subset or not. Subset. Okay. So first I am going to write here the set having first one A. What I have in the set A? A, B, C, D, E. Set B I also have C, D, E, F. Set C I have B and D. Set D also I have A, E. Now very first question they asked to do. See, what is first question? C is a subset of D. Come on student, speak it on. C is a subset. Now we have to find whether the set C के जितने भी एलिमेंट्स है क्या वो पूरे एलिमेंट B में है, पहले चेक करते हैं। C क्या बोला है, C जो है मतलब C के एलिमेंट कौन से है, B और D। ये B और D किस में होना चाहिए, सेट B में होना चाहिए। B में है क्या, देखो B में सिर्फ मेरे पास क्या है, B है, D है, B नहीं है, B है, we don't have the element of B in the set B। मतलब ये क्वेश्चन क्या है, false। Understood? क्या बोला है, सेट C के एलिमेंट सबसेट होने चाहिए B के, तो नहीं है क्योंकि C के एलिमेंट्स B में नहीं है। Come on the next question. A is a subset of D. Second one. A is a subset of D. Now we have to see whether set A के एलिमेंट्स D में है कि नहीं, पूरे सेट A के एलिमेंट्स D में है कि नहीं। Now we have to find it. Now A are having element, which element we have in the A, B, C, D, E, and we have the element in D, A and E. So what the remaining element we don't have in set D. So this also false. Come on, third one. Third one question, D is a subset of B. D is a subset of B. Means D के एलिमेंट्स किसमें होने चाहिए, B में। D के एलिमेंट्स A और E है, और D में क्या एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, देखो A और E। Only सिर्फ E I can find. I didn't having the element A. A एलिमेंट नहीं है। सुने, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि कंप्लीट एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं हमको दूसरे सेट में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, D is a subset of A. D is a subset of A. मतलब D के एलिमेंट्स किस में होने चाहिए, पूरे एलिमेंट्स किस में होने चाहिए, A में। Means all the elements of D should be we have to find from A. Come on, D में A और E है, सी स्टूडेंट A और E, और यहाँ पर भी देखो A भी है और यहाँ पर E भी है ना दोनों।
कंप्लीट एलिमेंट है, दैट इज ट्रू। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, B इज अ सबसेट ऑफ A, मतलब B के सारे एलिमेंट्स किस में होने चाहिए स्टूडेंट? A में होने चाहिए। तो B में कौन सा एलिमेंट है? C, D, E, F। और A में कौन सा एलिमेंट है? We don't have F here, right? We don't have F, so it became false. Sixth one question, what is the sixth question is given? C is a subset of A. C is a subset of A. बताओ C के एलिमेंट किस में होने चाहिए? A में। C element should be in the A. C having B, D. C, B, D. Here also we have B, D. Right now? So it is true because we get the element. Right, student? Understood now? Come on, have a look one more time fast, quickly. Then we are going to solve next question. Okay, students. Next. Now, question number 2. Here, take the set of natural number 1 to 20 as universal set and represent in the Venn diagram. Now we have to show Venn diagram. Here we have two questions, so we have to represent two Venn diagram. Okay, student. Come on, the first question, what they asked to do was write a, here we have they asked universal set. For first question also we had universal set, that is 1 to 20 I have to take, 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20 as a universal set. Now next question, next they asked x, and x is what? It is in a set builder form. Now we have to solve such that x is the element of natural number and 7 is greater than x and greater than 5. Okay. Yes, student. First we have to solve it. See, now we have to take the element for the x. Greater than 7. Greater than 7 it became, you know student, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. And it is that less than 15. So means we have to take on limitation, that is 14 only. Okay? क्या बोला स्टूडेंट यहाँ पर देखो अच्छे से, bigger than 7 8, smaller than 15 that is 14. Understood? Now we have to represent it by the Venn diagram. So student, Venn diagram, see like this we have to explain. Anything you can draw with the, you can draw circle, box, oval shape, anything, right? Represent here as universal, this box as a universal. Now student, match what is remain. Okay, now what I am going to do, I am taking one oval shape in here and I am writing, it is here, I should write set x. ये मेरा ओवल शेप है, इसमें मैं सिर्फ एलिमेंट ऑफ x लिखूंगी। तो कौन सा एलिमेंट है मेरे पास x के? 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12, 13 and 14. Okay student? Now whatever the element is left, अभी now we have to match. Now what element is left? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ये सारे एलिमेंट्स कहाँ चले गए? x के अंदर. अब बचे हुए जो भी एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के, वो भी आपको रिप्रेजेंट करना है. नाउ रिमेनिंग एलिमेंट यू शुड राइट हियर 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 अंदर चला गया. 14 से बड़ा 15 16 17 18 19 and 20. Understood that? It is a Venn diagram. Now next question also they are asked to do. What is second question? Again we have to take the universal set. Come on, what is universal set we have to take? 1 to 20 natural number. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Now second question they asked why. What is that why? They asked why is the such that of element of natural number and why is a prime number from 1 to 20. Come on student, here we have to find the element of y. How we want to find the element of y here? Prime number already explained in the first lecture. What is that? हाँ एक सिर्फ दो ही टेबल में बिलोंगिंग होनी चाहिए ना. नंबर किसमें से होना चाहिए? दो टेबल में होना चाहिए. चलो now 1 to 20 है means we have to find 1 is non prime neither composite. तो 1 we have to doesn't include. Now try to take the 2. Yes, 2 is a prime number because of 1 or 2 भी टेबल में belonging है. 3 also prime number but 4 belonging 1 2 4 also means more than 2 table. We don't take 4. 5 we can take. 7 we can take. Don't take 9 because 9 also having more than 3 tables. 10 also. 11 you can take. 12 13 also we can take. 14 no, don't take 14. 15 also we are not going to take. 16 also. 17 take. 18 also having more than table. 19 yes, 19 is the last number. See, these are the prime number means it is only belonging to table of 1 and themselves table. Now we have to represent by the Venn diagram. Now Venn diagram here. Write your universal set. Make a circle in that. Represent the numbers of Y diagram. Here we have Y element, that is 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and 19. And what the element left? See, take it. 2, 3, 7, 5, 7. Okay. Next 11, 13, 17 and 19. ये सारे एलिमेंट्स y सेट में चले गए. जो बच गए एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर. क्या बच गया यहाँ पर? 1, now 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 and 20. ये सारे एलिमेंट्स बच गए हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिए. अंडरस्टूड स्टूडेंट? वॉच मोर